साइकिल ऑफ सोशलाइजेशन पर हमारी दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में हमने प्रोफेसर हैरो की साइकिल के पहले 3 स्टेजेस के बारे में जाना। पहली, हम बिना किसी जानकारी के पैदा होते हैं एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जिसे बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं होता। दूसरी, हमारे माँ बाप, रिश्तेदार और टीचर्स हमें शिक्षा देते हैं। तीसरी, यह शिक्षा और रीइंफोर्स या सुदृढ़ होती है समाज और धर्म के नाम पर या फिल्मों और गानों के द्वारा। वेनेजुएला के एक शांति निर्माता लुइस अपनी जिंदगी के कुछ उदाहरणों से हमें साइकिल को और अच्छे से समझने में मदद कर रही हैं। हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हम हमें सिखाई जा रहे कुछ बातों से सहमत ना हो और उसके खिलाफ आवाज उठाएं तो हमें दंडित किया जाता है। I think this question is very interesting because at some point your skin color is also related with your economic power and with other disparities and inequalities in my community and in my context. For example, I remember the story of the black person in my community was into jail because he was suspicious of committing a crime, but his judicial process just lasted forever. But meanwhile, a white person went to jail because of drugs trafficking, but he had the money to pay for a fence and go out of the jail. In 2022, I had the possibility to go to Kenya and in East Africa, and in that context, I realized about, I think, such important things based on race, because there, everybody consider myself as a white person because my skin color is lighter than them, and they associate my skin color to my economic power. So I remember everybody asking me to give them or support them with my money because they expect me, like for being white, to have economic resources. But when I went to the US, the story was a bit different because there I'm definitely a not white person, and I'm at a kind of weird thing that we already call Latinos, and this is a mix of all the identities I talked about before. And I feel that also this kind of rewards or punishment are mainly based on the place where we were born or the place where we were raised or the place where we are right now, because rewards and punishments based on our identity are mainly defined because of the social environment where we are. इन रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स को प्रोफेसर हैरो कहते हैं एनफोर्समेंट्स, और इनके नतीजे बहुत बुरे होते हैं। So I think that one of the results of my psychological socialization is mainly related to the hate I have been feeling against myself because of my skin color, and it's also having this kind of feeling that for me it's more difficult to reach what I want or reach my goals because who I am. In relation with white people, I always feel an disadvantage, and in my work this is also a problem because I work, for example, in the fundraising, and most of the organizations and international organizations with whom I relate to, because of their donors or funders, their mainly representatives are white persons. So this also has affected me and the way how I come into a negotiation with a donor and how I feel less worthy because of my skin color, and even how this affects my personal relationships because of this feeling of inferiority because for who I am. एनफोर्समेंट्स की वजह से पीड़ित कभी-कभी खुद इस भेदभाव, हिंसा और अत्याचार की साइकिल को आगे बढ़ाने लग जाता है। So I will say that even when I'm currently in therapy to work on this and to become a better person, the reality is that I'm still holding some bias that affects my personal relationship when it comes to intercultural and interracial exchanges and experiences. But most of the time, the bias I'm still holding with myself is that white people, they have their reality already solved, they have everything figured out, and they don't have anything to worry about because they have everything what they need to be successful. And if you are white, you can be and you can do whatever you want because the world is yours. But if you are a black person or a mixed person like me, you have it very difficult, and that's still a bias. I'm still working on that. लुइस की तरह हम आपको भी इनवाइट करते हैं अपनी खुद की साइकिल ऑफ सोशलाइजेशन पर रिफ्लेक्ट करने के लिए। ये साइकिल सिर्फ रंग रूप ही नहीं बल्कि हमारे कास्ट, जेंडर और रिलीजन से भी ओरिजिनेट हो सकती है। तो हमें बताइए, आपको आपके घर वालों ने इन सब के बारे में ऐसे कौन से मैसेजेस दिए हैं जिन्हें आप आज भी रीइंफोर्स करते हैं? हमारा स्वभाव है कि हम जो देखते हैं या हमें जो
सिखाया जाता है, हम उसे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं समाज में अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन जब हम इस साइकिल को तोड़ने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो ये बार बार रिपीट होती रहती है। जो एक समय पे पीड़ित था वो खुद अपराधी बन जाता है। इस साइकिल को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। कैसे? इस साइकिल के जड़ में होता है डर, अज्ञान, भ्रम और असुरक्षा। तो इसे तोड़ने के लिए आपको अपने खुद के डर और इनसिक्योरिटीज का सामना करना होगा और एक एक्टिव लर्नर बनना होगा, ताकि आप अज्ञान को खत्म करके इस विशिष्ट साइकिल से बाहर निकल सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।